Machephy Eduworld. Good afternoon, everyone. आज हम latest law का एक और topic start करेंगे and that is friction. So, friction is something which resists the motion, right? That is what we have learned about it. That is what we already know. And जब भी कोई motion हो रहा है, there is a force which resists the motion. What it wants is to stop the motion. And the role of friction in day-to-day life is very much. Itna we know that in cars and in any automobile, 20% of the petrol or energy goes in overcoming the friction. And if friction were totally absent, then your car or bike will not go anywhere. Okay, it would be impossible to ride a bicycle or hold a pencil, and you won't be able to ride if there is no friction. Your pencil is really smooth, it becomes difficult to write. And friction is what holds the your cloth is made up of threads, right? Very small, thin threads, and they hold each other because there is a friction. So that is the role of friction in our day-to-day life. Even when you walk, what happens? So when you walk your first leg, you move forward with the help of your second leg. And think of it like this. So when you walk, you hold your first leg. Now just try to imagine how you walk, and your first leg is completely fixed. This leg is completely fixed. The leg which is rear to you is completely fixed when you put the front leg, this leg from back to front. And then you fix this leg. When you fix this leg, and then you move the other leg from back to front. Okay, this motion keeps on repeating. So when you try to move forward, you're basically applying a force in the backward direction on this feet. So ये वाला पैर आगे करने का try कर रहे हैं. When you're trying to move the leg 1, your leg 2 is fixed. So when leg 2 is fixed, then what happens? जब ये पैर आगे करने का try करेंगे, so due to that, there will be a force on your leg 2 in the backward direction. This force is due to your own motion. है ना? First वाला leg जब आगे करने का try करेंगे, तो second leg पे force लगेगा पीछे. So if there is a very smooth surface, you'll just slip out because there is a force in the backward direction. And to counteract this force, to keep you at rest, what is applied here by the surface, by the ground on your feet is this small f, which is known as the force of friction. This is the force of friction. So this happens, and that is why you're able to move. And a very simple example you can take is when you have a book on the table. You keep a book on the table and it is just at rest. Just kept at rest. तो इसमें कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा. Just kept at rest. दो ही फोर्सेस होंगे, नॉर्मल फोर्स एंड mg. Just two forces. नॉर्मल फोर्स लगेगा ऊपर और mg लगेगा नीचे. So normal force is a response of mg. Surface is applying mg force. But if you apply a very small amount of force in this direction, small amount of force in the forward direction, then what will happen? दूसरा external force लगेगा from the forward side. Not external force,
That is the force applied by this surface. Force applied by the surface. And this force applied by the surface will be applied on the tangent to the surface like this. Small f or frictional force is applied tangent to the surface, and this force will balance the external force. Assuming कि F external बहुत ज़्यादा नहीं है, this is up to a limit. Friction से हमेशा force कम है इस F का. So of course in the vertical you can write N is equal to Fg, and in the horizontal F is equal to F only if acceleration is zero. Correct? There is no acceleration; it is remaining at rest. So what is this force doing? What is this force doing such that friction starts acting? कि normal case में ऐसा क्या difference था कि जो इस case से अलग है? But what is the difference between when the block is just kept? When the block is just kept. और दूसरा केस जब हम ब्लॉक पे एक्सटर्नल फोर्स F अप्लाई कर रहे हैं. So we are going to understand this friction from a microscopic point of view, and then we'll come back and we'll see कब friction लगता है, किस condition से friction लगता है, what is the value of frictional force that acts on a body, things like that. So normal case in this, just have a block. The block is kept on the surface. So simply normal force पहले mg लगेगा नीचे के डायरेक्शन में, एंड सरफेस लगाएगा नॉर्मल फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में. ये दोनों आपस में एक दूसरे को बैलेंस आउट कर लेंगे. एंड दिस इज व्हाट वी सी. अच्छा, कांटेक्ट की अगर बात करें यहाँ पे, इफ आई जूम दिस, यहाँ पे एक छोटा सा एरिया लेते हैं और उसको जूम आउट करते हैं. इफ यू जूम इन यू विल सी कि कोई भी सरफेस परफेक्टली स्मूथ नहीं होता है. Even if you have polished a surface to a very high extent, it will still have this ridges and rifts and rough surfaces like this, arrangements like this. And same happens for the नीचे वाला surface, जो surface है, that is also just billions and billions of the small rifts and valleys. कितना भी smooth कर ले surface को, but बहुत ज़्यादा zoom in करें अगर, you will see that there is a rough surface. This is always true, huh? This is always true. Unless you use very specialized kind of machining to make it really, really smooth. Most of the normal objects or बहुत smooth objects they are rough when you see them at a microscopic level. Even if you want to imagine this thing, just think about Earth. Earth is almost a perfect sphere. It's almost a perfect sphere. From space, you cannot distinguish between the Mount Everest and deepest valleys. You cannot distinguish it. Right? From the moon, if you see it, you see the Earth is a perfect round shape. But as astronauts come closer to the surface, if you're an astronaut and you're watching it from the moon, you'll see it as a perfect sphere. But just as हम atmosphere में enter करते हैं, then you can see there are mountains, there are ridges, and वो तभी दिखते हैं जब Earth के हम बहुत close आ जाते हैं. Mountains, then you'll see road पे गड्ढा है वो भी दिख रहे हैं. So you know how rough it is. There's a building, then there's a tree. So all these are basically rough things, which they can be compared to the rough figures on this smooth surface. बहुत ज़्यादा smooth भी है, तो भी there is a friction. So this is how you can imagine कि जब भी microscopic level पे जाएंगे, there is always this cones and shapes and valleys like structure. और contact हर जगह नहीं होता यहाँ पे. Contact हर जगह नहीं होगा, कुछ ही points पे contact होते हैं. And this is necessary. अगर हर point पे contact हो जाए, then what your chemistry says is that, if you have learned chemistry, your chemistry says that कि bonding हो जाएगी. Right? This is the upper surface and this is the lower surface. यहाँ पे भी atoms हैं and यहाँ पे भी atoms हैं. Then you know that कि most of the अगर charged particles नहीं है and atoms are at an appropriate distance, so there is intermolecular forces of attraction. Intermolecular forces of attraction, then that will always be attractive.
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लगेंगे, और अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिन पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लग रहे हैं वो बहुत ज्यादा हो जाए, तो देयर इज अ प्रोसेस नोन एज कोल्ड वेल्डिंग that happens. Process known as cold welding that happens. And actually experiment space में किया भी गया है. You know there is an international space station that is floating around the Earth. And इसका time period खत्म ही होने वाला है, and it will be falling into the sea. Sea में गिरा था because land पे गिराना is not safe. So experiment done is like this. So what they have done, they have taken two cylinders. They have taken two cylinders. और सिलेंडर का ये वाला पोर्शन बहुत ही ज्यादा स्मूथ किया है. दिस पार्ट इज रियली स्मूथ, बहुत ज्यादा स्मूथ किया हुआ. एंड देन दे टुक इट टू स्पेस, एंड देन व्हाट दे ट्राइड इज दैट दे हैव जस्ट ब्रॉट इट क्लोजर. सो क्लोज किया, एंड व्हाट दे ऑब्जर्व दैट आफ्टर सम टाइम दे कैन नॉट फाइंड द point at which it could be separated. Means इसको force apply करके, means यहाँ पे just see a line, and force apply करके भी you cannot separate it. And this is the example of a cold welding. Cold welding means बिना गर्म किए, बिना melt किए, they are attached to each other. अर्थ पे भी possible है ये, अगर vacuum create किया तो. Vacuum create किया तो अर्थ पे भी possible है, because किसी metal के surface पे if it is kept in air, you know that there is a layer of oxygen, nitrogen, तो वो bonds बना लेते हैं metallic surfaces से. तो वो बहुत ज्यादा हो जाता है तो of course it is called rusting. But normally बहुत ज्यादा हो जाता है, water vapor भी ज्यादा होता है, water भी ज्यादा लगता है तो हम rusting बोल देते हैं इसको. And normally this is the how with air में there is a very number of molecules that are attached to the surface. If those are removed in vacuum, you can just cold weld any two similar substances. तो इसलिए बहुत ज्यादा स्मूथ सरफेस अगर हम कर दें तो फिर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा लगता है, you can say, है ना. अगर दो सरफेस बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो, फ्रिक्शन बहुत ज्यादा लगता है. You will be of course taking up engineering, then you'll find that there are few scientific instrument होता है, tool होता है, इसको कहते हैं slip gauge. The slip gauge, it is of the size of your thumb, and it is like rectangular blocks होते हैं वो. इनका area same होता है but length vary करता है. तो slip gauge को बहुत ज्यादा smooth रखते हैं slip gauge को. So slip gauge को एक दूसरे के ऊपर you see, they're really smooth, and we use it for measuring length and many other things also. तो slip gauge को चिपकाने के लिए एक दूसरे में we just clean it really well, और एक slip gauge को दूसरे slip gauge के ऊपर slip करते हैं. And when you slip it like this will just stick to this surface. यहाँ पे चिपक जाएगा, and it becomes really difficult to separate it by applying force in this direction. It is just the size of your thumb, and it will be near impossible to separate it using force like this. Sir? Yes. सर आपने बोला कि स्मूथ सरफेस में फ्रिक्शन सबसे ज्यादा लगता है. See, बहुत ज्यादा स्मूथ सरफेस है, बस इतना स्मूथ कि एटम्स आपस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लगा पा रहे हैं, बॉन्डिंग हो जाए. बहुत ज्यादा पॉलिश्ड सरफेस, एक्सट्रीमली पॉलिश्ड सरफेसेस की बात कर रहे हैं. थोड़ा पॉलिश किया तो फ्रिक्शन विल बी लेसर. बहुत ज्यादा पॉलिश कर दिया, एकदम स्मूथ ही कर दिया, in that case friction force will be really high. That is because of this bonding. यहाँ पे मैंने इस प्रोसेस को बोला है कोल्ड वेल्डिंग. So atoms आपस में ऊपर वाला सरफेस 1
और surface 2 आपस में अगर bond बना ले, in the extremely polished case, then they will be joined together. तो slip case में ऐसा होता है कि because it is extremely smooth, so they make bond with each other. So उसको separate करने के लिए you cannot separate it like this. Then you have to separate it by slipping on each other. It's the force of slip. तो slip करके फिर separate करते हैं. तो इन सब चीजों के बारे में ज्यादा पढ़ना नहीं है. I'm just giving you an idea कि frictional force क्यों लग रहा है. अभी सी इन दोनों बहुत ज्यादा smooth surfaces हो गए, तो इनके बीच there will be intermolecular forces and in some cases bonding. If there is a bonding, then if you try to remove it, there will be a huge force. ठीक है. अभी हमारे नॉर्मल केस में आता है, ये भी बहुत ज्यादा स्मूथ सरफेस, एक्सट्रीमली स्मूथ नहीं, बट दिस इज व्हाट अ नॉर्मल स्मूथ सरफेस लुक्स लाइक. अभी रफ सरफेस की बात करें एंड यू लुक इट अंडर अ माइक्रोस्कोप, इट विल लुक रियली वियर्ड. बहुत कम पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट होते हैं. देयर इज अ नॉर्मल सरफेस, बहुत ही कम पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट होते हैं. थिंक ऑफ इट लाइक दिस. So valleys and ridges, peaks, things like this. So अब इसको sideways move, अगर see this, यही normal force पे लगाता है, छोटे छोटे normal force इसी के ऊपर लगता है, and इनको add कर दिया, you will get a net normal force. छोटे छोटे dn लगेंगे, total सबको add कर दिया, you'll get a net normal force. But see what happens if you try to move the ऊपर वाला part and the below वाला part. So in points पे they have been joined together. They have been cold welded, but at a very small points. At a very small points, some points only. They are cold welded. So once they have cold welded, what will happen if one surface is kept, if one block is kept over the other surface, and then you try to move it. Then you try to move it. Suppose force gradually बढ़ा रहे हैं, पहले 5 न्यूटन लगाया. So force 5 न्यूटन लगाया, तो इस वेल्डिंग की वजह से it will just apply another 5 Newton of friction to balance it out. 10 Newton लगाया. Then suppose this surface also can also apply 10 Newton. But there will be a limit to this attraction. There will be a limit to this force of cold welding, because बहुत ही कम points पे cold welded. And this is the reason कि suppose there is a limiting friction. There is a limit to the friction called the limiting friction. So let us say limiting friction is 17 Newton. So 17 Newton तक कोई भी issue नहीं होगा. 17 Newton तक all the bonds they will be intact. But just as you apply 17 Newton, this will be ready to break off the surface. 17 Newton will be, it will be stable or static. So 17 Newton से जब भी कम force लगेगा, it won't be moving. But जैसे ही force 17 Newton से ज़्यादा हुआ, let us say force is 20 Newton. Force 20 Newton हुआ, then what happens? This cold welded bonds, they break off. They break off. And then sliding, or we call it slipping, slipping can occur. Slipping or sliding can occur. सर यहाँ पे बॉन्ड कैसे बन सकता है? यहाँ पे स्मूथ सरफेस थोड़ी है. हाँ, बट कुछ पॉइंट्स पे कांटेक्ट है ना. यहाँ पे भी तो एटम्स मॉलिक्यूल्स होंगे ढेर सारे, तो बहुत छोटे छोटे जगहों पे बॉन्ड्स बन रहे हैं, हर जगह बॉन्ड नहीं. ठीक है. ओके. सो अब एक्सटर्नल फोर्स के रिस्पॉन्स में सिर्फ 17 न्यूटन ही फोर्स लगा, इसलिए धीरे धीरे फोर्स बढ़ाते जाएंगे तो एक टाइम के बाद फ्रिक्शनल फोर्स कांस्टेंट हो जाता है, उसकी वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है. और उसके बाद फिर पार्टिकल या ऑब्जेक्ट या बॉडी मूव करने लगेगी, एंड देन यू कैन से दैट that friction is acting and the bonds are broken, or slipping has started, sliding has started. This is the whole mechanism of friction.
because of the cold welding, because of the bonds making, intermolecular forces of attraction, whatever you want to call it, there is a hindrance to the relative motion. There is a hindrance to the relative motion. और इस सब को compile करने के लिए, whatever we have learned here, in short, we write friction opposes relative motion. Friction opposes relative motion. This rule you must remember. बहुत important rule है. तो ये फर्स्ट सरफेस ले लिया या सेकंड सरफेस ले लिया, तो फोर्स एक्सटर्नल फोर्स की वजह, एक्सटर्नल फोर्स क्या चाहता है कि रिलेटिव मोशन हो जाए, बट फ्रिक्शन विल एक्ट इन सच अ वे कि रिलेटिव मोशन ना हो. फ्रिक्शन विल एक्ट इन सच अ वे कि रिलेटिव मोशन ना हो. सो फॉर एग्जांपल, यू हैव दिस सरफेस एंड इसके ऊपर एक ब्लॉक रख दिया. सो फर्स्ट केस है, ब्लॉक रख दिया तो इसको कोई भी फ्रिक्शन नहीं लगेगा. As soon you apply a small amount of force in the forward direction, friction will try to stop the relative motion, because ये first वाला block second वाले block के relative आगे जाना चाहता है, second वाले surface के relative आगे जाना चाहता है. So friction will try to stop it. Friction will try to stop it. तो कुछ cases में FBD draw करेंगे, ये rules apply करेंगे, and then we'll start the numerical analysis. कैसे value calculate करता है. ये फर्स्ट था, यहाँ से नोट डाउन स्टार्ट करना है. इससे पहले का तो जस्ट डिस्कशन मोस्टली. द फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन. इस चीज से, इस वर्ड का क्या मतलब है, दैट विल बी अंडरस्टैंडिंग हियर. अच्छा, इफ यू टेक अ सेकंड सिस्टम, फॉर एग्जांपल दिस इज योर फर्स्ट ब्लॉक एंड सेकंड ब्लॉक. सेकंड ब्लॉक लेटर से बहुत ही स्मूथ सरफेस पर रखा हुआ. तो यहाँ पे if you draw the FPD, this will be very simple. First case, में F in the forward direction, small f in the backward direction. ऊपर लगेगा नॉर्मल फोर्स और नीचे लगेगा एनजी. सिंपल सा एफपीडी डायग्राम. अभी हम स्टैटिक्स केस की बात कर रहे हैं. इस ऑब्जेक्ट्स दिस हियर फ्रिक्शन फोर्स इज कांस्टेंट. So in this case also, if I take this as 1, 2, यहाँ पे फ्रिक्शन है, there is a friction here, but ये वाला सरफेस स्मूथ है. ये वाला सरफेस में सिर्फ 2 और जो सरफेस है 2 और 3 के बीच कोई भी फ्रिक्शन नहीं है. And then you let us say you apply force on this one, external force लगाया यहाँ पे. So इसका एफपीडी ड्रॉ करने का ट्राई करते हैं. So first you will take first one object or then second one object. ठीक है, try to draw the FPD. एक सिंपल सा रूल है कि फ्रिक्शन में रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए. A friction doesn't want the relative motion to happen. So draw the free body diagram. You can take this mass as M1, M2. A friction value you can just take it as small f. Draw the FPD. अच्छा नमन, इसका FPD बता लिया फर्स्ट वाले का? हाँ सर, बता लिया. हाँ, कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, किधर लगेंगे, टेल मी. सर M1G डाउनवर्ड लगेगा. हाँ. और अब उसके ऊपर लगेगा N, मतलब N नॉर्मल फोर्स. या. और लेफ्ट साइड में फ्रिक्शन. लेफ्ट साइड में फ्रिक्शन. हाँ, ये इसके बॉटम से. अच्छा. तो लेट नमन से यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा. ओके, इस केस में क्या होगा फिर?
इस सेकंड वाले केस में नीचे नीचे M2G, राइट साइड में फोर्स लग रहा है, राइट साइड में फोर्स लग रहा है। एक्सटर्नल फोर्स। हाँ, और सर इसमें मुझे नॉर्मल फोर्स का डाउट है, लग रहा है कि नॉर्मल फोर्स लगेगा कि नहीं। नॉर्मल फोर्स तो लगेगा ही, वो तो पहले से लगता है। क्योंकि सरफेस स्मूथ है तो इसलिए। नहीं नहीं, स्मूथ से मतलब नहीं है, स्मूथ हो या रफ हो नॉर्मल फोर्स तो लगेगा। स्मूथ और रफ से फ्रिक्शन फोर्स चेंज होता है, नॉर्मल फोर्स चेंज नहीं होता। ओके। हाँ, और कोई फोर्स? नहीं सर, इतना ही बनाया मैंने। अच्छा अच्छा, सी नमन, तो मैंने दो ब्लॉक्स रखे हैं। नीचे वाला सरफेस मान लो बहुत स्मूथ है, तो परफेक्टली स्मूथ तो नहीं बट बहुत स्मूथ है। आइस के ऊपर दो ब्लॉक्स रखे हैं। हम्म। तो इस पे मैंने फोर्स लगाया, ये आगे जा रहा है, यहाँ तक तो ठीक है। बट ये वाला हाँ ब्लॉक पीछे जाने लगा, ऐसा पॉसिबल है क्या? सर, वो तो उसके साथ में चला जाएगा। साथ में जाना चाहिए, राइट, वेरी गुड। तो ये हाँ वाला ब्लॉक जो है फर्स्ट वाला, इसके साथ साथ जाना चाहिए। हाँ और उसमें फ्रिक्शन हेल्प करेगा, बिकॉज फ्रिक्शन का मोटिव क्या है कि रिलेटिव मोशन ना हो, है ना। फ्रिक्शन का ये मोटिव नहीं होता कि मोशन ना हो, फ्रिक्शन का मोटिव होता है कि रिलेटिव मोशन ना हो। तो दूसरा वाला ब्लॉक जब आगे जाना चाहेगा, तो पहला वाला ब्लॉक उसको साथ में ले जाना चाहेगा। हाँ सेकेंड वाला ब्लॉक चाहता है कि फर्स्ट वाला ब्लॉक उसके साथ साथ जाए। हाँ तो सेकेंड वाला ब्लॉक फर्स्ट वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा आगे, और फर्स्ट वाला ब्लॉक भी चाहता है कि सेकेंड वाला ब्लॉक साथ साथ जाए। तो हाँ। फर्स्ट वाला ब्लॉक सेकेंड वाले ब्लॉक को साथ साथ ले जाने के लिए उससे फोर्स लगाएगा पीछे, फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा पीछे। तो फिर ये दोनों साथ साथ जा सकते हैं। अगर फ्रिक्शन सफिशिएंट है तो दोनों साथ साथ मूव कर सकते हैं। तो एक बुक के अगर बुक के ऊपर दूसरी बुक रख दी और नीचे वाला बुक मूव कर रहे हैं, तो ऊपर वाला बुक भी साथ में आना चाहता है। एंड दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, बिकॉज ऊपर वाले बुक पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वो साथ साथ आना चाहिए। तो यहाँ पे ये रूल ध्यान देना सर, है। हाँ, फ्रिक्शन फोर्स आगे की डायरेक्शन में क्यों लगेगा? सी वही तो कह रहे हैं, रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। सेकेंड वाला ब्लॉक आगे जाना चाहता है, तो हाँ सर। फर्स्ट वाला ब्लॉक चाहता है कि उसके साथ साथ रहे, हाँ रिलेटिव मोशन ना हो, रिलेटिव मोशन ना हो। यहाँ पर रिलेटिव मोशन हो रहा है, हाँ सेकेंड वाला आगे जाना चाहता है। तो हाँ। फर्स्ट वाला आगे ना जा पाए उसके लिए पीछे फ्रिक्शन लगा रहा है इसमें। ठीक है। और सेकेंड वाला ब्लॉक चाहता है कि फर्स्ट वाला ब्लॉक भी साथ साथ जाए, क्योंकि रिलेटिव अगेन से हाँ रूल, रिलेटिव मोशन ना हो। सेकेंड वाला ब्लॉक फर्स्ट वाले ब्लॉक पे लगाएगा फ्रिक्शनल फोर्स इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन। फिर से यहाँ पे ठीक एफ है। और एफ एक्शन रिएक्शन पेयर हो गए, क्योंकि फोर्सेस हमेशा पेयर हाँ, में लगते हैं। बैलेंस हो गया। बैलेंस अप हो गया। तो फर्स्ट वाला ब्लॉक आगे मूव कर सकता है सेकेंड वाले के साथ। अगर फ्रिक्शन सफिशिएंट हाँ सफिशिएंट है तो दोनों साथ साथ जाएंगे। ठीक है, हाँ सर, ठीक है। ओके। और कोई क्वेश्चन? नहीं सर, अभी क्लियर है। सर एक और डाउट है। हाँ, सर नीचे वाले ब्लॉक में M1G नहीं लगेगा ऊपर? ये नीचे वाले ब्लॉक में आपका M1G क्यों लगेगा ऊपर? M1G तो ऊपर वाले ब्लॉक का है ना। एक N1 फोर्स लगेगा नीचे के डायरेक्शन में, बिकॉज इट इज इन कांटेक्ट। ये N1 लगेगा यहाँ पे, एक्शन रिएक्शन पेयर। थर्ड केस लेते हैं, टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। थर्ड केस में भी यहाँ पे फ्रिक्शन है, यहाँ पे ये वाला स्मूथ है। एंड यू टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम, बट इस बार फोर्स इस पे नहीं लग रहा, फोर्स हमने ऊपर वाले पे लगाया है, यहाँ पे फोर्स लगा है। देन ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। So everybody will draw the free body diagram and upload it on the group right now. I hope कि सबके पास फोन है। तो 5 स्टूडेंट्स इन क्लास, सबको फ्री बॉडी डायग्राम अपलोड करना है ग्रुप में।
If I say smooth means friction नहीं होगा, if I say rough means there is a friction. तो दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है and you have to upload it on the WhatsApp. Barbie, your question number 3 का FVD is correct. Also send me question number 4 का FVD. और किसी ने सेंड नहीं किया है, सिर्फ बारहवीं ने सेंड किया है. सबको सेंड करना है विद इन 5 मिनट्स, डोंट टेक मोर देन दैट. दोनों सेंड करना है. सेकंड केस में ये वाला सरफेस स्मूथ है M1 और M2 के बीच का, एंड M2 और सरफेस के बीच का सरफेस रफ है. तो लेट्स चेक व्हाट विल हैपन इन दैट केस. अच्छा, निर्णित और नमन ध्यान रखना है, M2 जो है वो दो कॉन्टैक्ट से सरफेस में है. तो M2 में ऊपर से फ्रिक्शन लग सकता है, नीचे से भी फ्रिक्शन लग सकता है. तो M2 M1 की कॉन्टैक्ट में है तो यहाँ पे ऊपर फ्रिक्शन लगेगा. M2 सरफेस से कॉन्टैक्ट में है तो उसकी वजह से कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा बिकॉज इट इज स्मूथ. यहाँ पे M1 M2 के कॉन्टैक्ट में है तो M2 पे फ्रिक्शन लग सकता है बट नॉट फ्रॉम M1. M2 M1 के बीच कोई फ्रिक्शन नहीं होगा बट M2 और सरफेस के बीच फ्रिक्शन होगा. तो इस बात का ध्यान रखना है. अर्जुन, you haven't sent me the photo. बाकी सारे स्टूडेंट्स ने सेंड किया है. सर मुझे समझा नहीं. समझा ही नहीं. क्या नहीं समझ में आया इसमें? लाइट गया था तो सर थोड़ा मिस किया थोड़ा. स्किप हो गया. यहाँ पे हम फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं. फ्रिक्शन लगता है जब भी रिलेटिव मोशन होता है. तो फर्स्ट केस में अगर देखें तो हम मींस एक्सटर्नली हम आगे मूव करने का ट्राई कर रहे हैं. दिस फ्रिक्शन, ये दिस फ्रिक्शन, इस ब्लॉक को, ये ब्लॉक सिर्फ सरफेस पे रखा हुआ है, उसको हम आगे मूव करने का ट्राई कर रहे हैं. एंड जब इसको आगे मूव करने का ट्राई करते हैं, व्हाट हैपेंस, ये सरफेस चाहता है कि ब्लॉक मूव ना करे. The block, when it doesn't want the block to move, then it will apply a frictional force in the backward direction. Because you have applied an external force in the right direction, the surface which does not want the relative motion to happen. Relative motion means in दोनों के बीच कोई motion ना हो. To make sure that it happens, it applies a friction in the backward direction. Is that clear, Arjun? Yes sir. In the second case, as I said, friction opposes relative motion. Friction हमेशा motion को stop नहीं करता है, but relative motion को stop करता है. So when you are trying to walk or something, when you are walking, motion is not stopped. But जिस पैर को fix करके second वाले पैर को आगे ले जाते हैं, वो fixed होता है, but पूरी body move कर रही होती है. So friction हमेशा relative motion को stop करता है, ना कि total motion को. So suppose दो blocks है, तो नीचे वाले ब्लॉक और सरफेस में फ्रिक्शन नहीं है, बट ऊपर वाले ब्लॉक में और नीचे वाले ब्लॉक के बीच फ्रिक्शन है. तो जब मैं नीचे वाले ब्लॉक का एफवीडी बनाता हूँ तो नॉर्मल फोर्स और एमजी और वो सब तो वैसे ही रहेगा, बट नीचे वाला ब्लॉक एक्सटर्नल फोर्स की वजह से आगे जाना चाहता है. सो व्हेन इट वांट्स टू गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, तो ऊपर वाला, नीचे वाले सरफेस से कोई भी रिलेटिव मोशन हो रहा है, बट यहाँ पे सरफेस स्मूथ है, तो इट कैन नॉट अप्लाई अ फ्रिक्शन. यहाँ पे फ्रिक्शन कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन विल बी 0. तो नीचे वाले सरफेस पे कोई फ्रिक्शन नहीं आ रहा बिकॉज इट इज स्मूथ, बट ये ऊपर वाले सरफेस से भी कांटेक्ट में है. तो ऊपर वाला सरफेस अगेन चाहेगा कि सेकंड वाला ब्लॉक डज नॉट मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. To make sure that it happens, it will apply a frictional force in the backward direction. यहाँ तक क्लियर है अर्जुन? सर Okay. So second वाला block then applies the frictional force on the first वाला block. तो second वाला block आगे move कर रहा है due to external force.
सो इट विल ट्राई कि फर्स्ट वाला भी साथ साथ जाए. अगेन एज आई सेड, फ्रिक्शन चाहता है रिलेटिव मोशन ना हो, ब्लॉक्स हमेशा साथ साथ जाए. जब ब्लॉक साथ साथ जाना चाहते हैं, बस फर्स्ट वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शनल फोर्स मुझे लगाना चाहिए आगे. तो अगेन ऑल फोर्सेस ऑलवेज ऑकर्स इन पेयर. तो इन दोनों में भी ये फोर्सेस हमेशा पेयर में होंगे. तो एक पे फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लग रहा है तो दूसरे पे आगे लगे. एंड तब इसका भी एक्सेलरेशन आगे की डायरेक्शन में होगा और इसका भी एक्सेलरेशन आगे की डायरेक्शन में ही होगा. एंड अगर फ्रिक्शन सफिशिएंट है तो दोनों का एक्सेलरेशन इक्वल आएगा. कैलकुलेशन पार्ट को भी करेंगे साथ. ये पूरी चीज क्लियर हुई? हाँ सर. ओके. अभी सेकंड इन द थर्ड केस, फ्रिक्शन सिर्फ ऊपर वाले सरफेस के इन दोनों के बीच और ये वाला स्मूथ है, बट मैंने फोर्स लगाया है ऊपर वाले पे. तो इसका वीडियो का ड्रॉ करें ऊपर वाले ब्लॉक का. एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है ये डायरेक्शन में. बाकी नॉर्मल फोर्स और एमजी लिख सकते हैं, M1G. तो जब ये वाला आगे मूव करना चाहेगा तो बड़ा वाला ब्लॉक चाहेगा कि रिलेटिव मोशन ना हो. तो एक बड़ा वाला ब्लॉक छोटे वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा पीछे की डायरेक्शन. कॉल इट स्मॉल f. In the same way, बड़े वाले ब्लॉक पे we can draw the FPD first. And upward and downward force draw करने में तो सब दिक्कत नहीं है. It is just M2G. This is the normal force, call it N2, and then the normal force, this is called the N1. यहाँ तो कोई इशू नहीं है. इस पे कोई अभी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, बट फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा. सो ऊपर वाला ब्लॉक आगे जाना चाहता है तो ऊपर वाला ब्लॉक ये चाहेगा कि सेकंड वाला ब्लॉक भी साथ साथ जाए. तो फ्रिक्शन चाहता है रिलेटिव मोशन ना हो. So it will then apply an external force in the forward direction, frictional force in the forward direction. So now there is a possibility कि ये वाला ब्लॉक भी आगे जा रहे हैं, acceleration A1. So ये वाला ब्लॉक भी आगे जा सकता है with acceleration A2. और फ्रिक्शन सफिशिएंट है, दोनों साथ साथ मूव करेंगे, एक्सेलरेशन भी सेम हो जाएगा. Is that clear? Yes sir. तो नमन फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा पेयर में लगेगी. तो थर्ड वाले केस में सेकंड वाले ब्लॉक के आगे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी. वैष्णवी योर ड्राइंग द फोर्स बट एरो भी बनाना है. maybe arrow बहुत small है दिख नहीं रहा, but your FVD is correct. Harvey's answer was already correct. Then with for you again friction लगेगा आगे की डायरेक्शन में for M2. Then is that clear? Yes sir. हाँ. या नमन. सर ये जो M2 पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, थर्ड केस में. हाँ सर थर्ड केस में तो वो M1 ने लगाया है. हाँ. M2 पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो M1 ने लगाया है, और M1 पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो M2 ने लगाया है. ठीक है. तो फोर्थ वाले का FVD फटाफट ड्रॉ कर लेते हैं. The block is like this. M1. Second block is M2. तो M1 पे कोई फोर्स नहीं है, बट M2 पे फोर्स है. So there will tell me M2 पे फ्रिक्शनल फोर्स कौन लगाएगा, M1 लगाएगा या नीचे वाला सरफेस लगाएगा? नीचे वाला सरफेस. नीचे वाला सरफेस. So नीचे वाला सरफेस लगाएगा फ्रिक्शनल फोर्स, कॉल इट F. एंड बाकी फोर्सेस तो ऐसा लिख सकते हैं. दिस इज N2, M2G, एंड द नॉर्मल फोर्स. अच्छा, ऊपर वाले सरफेस पे और कोई फ्रिक्शनल फोर्स होगा क्या? नो सर. नहीं. तो कोई भी मतलब कांटेक्ट तो है, बट सरफेस स्मूथ है.
सरफेस स्मूथ का मतलब है यू विल नॉट टेक एनी फ्रिक्शनल फोर्स। सो इसको ऐसे देख सकते हैं कि दो बुक्स हैं और ऐसा होता है कि बीच वाले बुक बहुत जल्दी से खींच दिया, बहुत जल्दी से पुल कर लिया। सो इन दैट केस व्हाट हैपेंस, अगर ऊपर वाला सरफेस स्मूथ है तो इट विल, ऊपर वाला ब्लॉक वहीं पे रह जाता है, सिर्फ नीचे वाला क्लॉथ और पेपर वो सामने आ जाता है, वो बाहर निकल जाता है। अच्छा, तो फ्रिक्शनल फोर्स का एफबीडी ड्रॉ करने में एनी डाउट, कोई क्वेश्चन अब तक यहाँ तक? अर्जुन, एवरीथिंग इज क्लियर नाउ? यस सर। ठीक है, ओके। तो ये तो था फ्रिक्शनल फोर्स का एफबीडी कैसे बनाते हैं। अब नेक्स्ट इज हाउ डज what is the value of the frictional force and how is it calculated, how to write it in free body diagrams. So that we are going to study next. That is how the frictional force acts and on what factors does it depend upon. So एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि ब्लॉक जितना बड़ा होता है उसको मूव करने में उतनी ही डिफिकल्टी होती है। अगेन, ब्लॉक जितना बड़ा हो उसको मूव करने में उतनी ही डिफिकल्टी होती है, राइट? छोटा ब्लॉक लिया तो इजीली मूव कर सकते हैं, कि अपोज करने के लिए तो सिर्फ फ्रिक्शन है। अगर फ्रिक्शन है, ऑफ कोर्स, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो ऑफ कोर्स सारे ब्लॉक्स को मूव करना इट विल बी इजी टू मूव। कोर्स अपना एक्सेलरेशन अलग लगाएगा तो मूव करना विल बी इजी। तो वन थिंग दे हैव ऑब्जर्व्ड कि फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो नॉर्मल फोर्स पे डिपेंड करता है। They have done several experiments and they have found that, जैसे इस केस में है, सपोज मास इज m1 एंड दिस इज m1g और ऊपर लग रहा है फोर्स नॉर्मल फोर्स। तो दे हैव फाउंड कि फ्रिक्शनल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल फोर्स। अगर सपोज बड़ा मास ले लिया तो नॉर्मल फोर्स बढ़ जाएगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ जाएगा। ठीक है, सेम मास है बट ऊपर से एक और फोर्स लगा दिया, ऊपर से एक और फोर्स लगा दिया, तो इस केस में तो नॉर्मल फोर्स आया था m2g, बट यहाँ पे नॉर्मल फोर्स बढ़ गया। तो अगर मैंने नॉर्मल फोर्स की वैल्यू बढ़ा दी यहाँ पे ऊपर वाला फोर्स की वजह से, द नॉर्मल फोर्स विल बी f plus m2g, f plus m2g। सो नॉर्मल फोर्स यहाँ पे बढ़ गया, सो अब इसको मूव करना और ज्यादा डिफिकल्ट होगा। यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स अगर लगेगा तो ज्यादा अमाउंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स लग सकता है। सो फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स ऑन द नॉर्मल फोर्स और इट्स अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। अनदर थिंग इज दैट इट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स एंड जरूरत के हिसाब से लगता है। फ्रिक्शनल फोर्स लगता है जरूरत के हिसाब से। तो दिस थिंग विल एस्टैब्लिश हियर, इट इज एक्सपेरिमेंटल, कि फ्रिक्शनल फोर्स depends upon normal force. Frictional force depends upon normal force. That is the second property. पहले क्या बताया था? Frictional force acts when there is a relative slipping. कब act करता है? जब relative slipping हो। और किस पे डिपेंड करता है? नॉर्मल फोर्स पे डिपेंड करता है। तो frictional force depends upon the normal force and is directly proportional to the normal force. अच्छा, अभी हम बात करेंगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन में there is no relative motion. Okay, so friction is proportional to the normal force, और जब हम proportionality sign remove करते हैं तो there is a constant known as mu. Mu is called coefficient of friction. Mu को हम बोलते हैं coefficient of friction.
एंड दो तरह के कोएफिशिएंट होते हैं, म्यू के एंड म्यू एस. म्यू के इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. म्यू के इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. मींस जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, जब रिलेटिव मोशन हो रहा हो, तब काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा. And mu is called coefficient of static friction. Coefficient of static friction. So this acts when relative motion does not happen. When relative motion does not happen. अब एग्जांपल से भी समझेंगे इसको. And this is applied when relative motion occurs. When relative motion is there. So यहाँ से भी समझ में आ रहा है, स्टैटिक मीन्स रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, रुका हुआ है. काइनेटिक मीन्स मूव कर रहा है. जब मूव करेगा तो रिलेटिव मोशन लगाएंगे. रिलेटिव मोशन होगा. सो रिलेटिव मोशन होना चाहिए, मोशन नहीं रिलेटिव मोशन होना चाहिए. तो अभी हम बात करेंगे, फर्स्ट इज स्टैटिक फ्रिक्शन. तो स्टैटिक फ्रिक्शन में ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. तो सिंपल केसेस की बात करेंगे. फर्स्ट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन. काइनेटिक फ्रिक्शन पे बाद में आएंगे. पहले ऑब्जेक्ट्स जो रेस्ट पे हैं उनको ऑब्जर्व करेंगे. ओके, एग्जांपल के थ्रू ही अंडरस्टैंड करते हैं. सो फर्स्ट एग्जांपल लिया हमने एंड देयर इज अ ब्लॉक को रेस्ट पे रखा हुआ है. जब रेस्ट पे रखते हैं तो कोई भी फ्रिक्शन फोर्स एक्ट नहीं करेगा. एंड लेट अस से यहाँ पे म्यू एस दिया हुआ है. म्यू एस की वैल्यू इज 0.5. 0.5 is a high value. And let us say यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स F लगा रहे हैं, जिसकी वैल्यू हम वैरी कर सकते हैं अपने क्वेश्चन के हिसाब से. And this is a block of mass 4 kg. This is a block of mass 4 kg. तो एफपीडी ड्रॉ करना है. एफपीडी ड्रॉ करना हमेशा इंपॉर्टेंट होता है. एक्सटर्नल फोर्स आगे के लगेगा, नॉर्मल फोर्स लगेगा ऊपर, mg लगेगा ऑफ कोर्स 40 न्यूटन लिख देते हैं, g को 10 मान के. एंड पीछे के डायरेक्शन में there will be friction because external force लग रहा है, तो पीछे की डायरेक्शन में there will be friction. तो different values of external force हो तो निकाल सकते हैं. So अगर नॉर्मल फोर्स की वैल्यू निकालते हैं, so normal force will be equal to 40 newton. Normal force is equal to 40 newton. और फ्रिक्शन की वैल्यू निकालते हैं, so फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी mu into n. Mu static friction. This will be equal to 0.5 into 40, that will be 20 newton. 20 newton. So normal force की value is 40 newton, friction force की value is 20 newton. But what will happen? Suppose external force की value है 20 newton. अगर external force की value 20 newton है, then FPD will be the same. जैसे यहाँ पे है वैसे ही लिख देंगे आप. So if external force is 20 newton, तो 20 newton sufficient force है. यहाँ पे if this value is 20 newton, then frictional force भी लग जाएगा 20 newton and acceleration in this case will be 0.
नॉर्मल फोर्स 40 न्यूटन को बैलेंस कर लेगा और फ्रिक्शन फोर्स एफ एक्सटर्नल को बैलेंस आउट कर लेगा। सेकेंड केस लेते हैं, what if my external force is equal to 10 Newton? External force 10 Newton, then you'll draw the FBD and then find out what happens, what will be the value of acceleration and what will be the value of frictional force. F find out करना है और acceleration find out करना है, ये दोनों चीजें find out करनी है। Solve it and send the FBD and solution on the WhatsApp group, or you can send me personally. Arjun, I'm expecting the FBD from you first. Arjun, can you tell me the value of frictional force that is acting here? 10. 10 is correct. So see, external force की value is 10 Newton. External force लग रहा है 10 Newton. And see, कभी ऐसा नहीं देखा हो कि external force लगाया right की तरफ और block move करने लगा left की तरफ. This is never observed. So what we say कि frictional force जो यहाँ पे लगा, that is only 10 Newton. It cannot be more than 10. अगर frictional force 10 Newton से ज्यादा हो गया, then your block will start moving in the leftward direction. और ऐसा कभी ऑब्जर्व नहीं किया गया कि फोर्स लगाया आपने राइट में और ब्लॉक ऑब्जर्व कर रहा है लेफ्ट में। सो यहाँ से देयर इज वन मोर थिंग दैट वी आर गेटिंग अबाउट फ्रिक्शन, दैट फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। मैक्सिमम वैल्यू की वैल्यू कांस्टेंट होती है, बट उससे कम जरूरत है तो उससे कम ही लगेगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है जरूरत के हिसाब से। It depends upon normal force, but it is a self-adjusting force. And that is true about static friction. Static friction or friction is a self-adjusting force. जितना जरूरत होगा उतना ही लगेगा। Self-adjusting force. तो यहाँ पे 10 न्यूटन ही रिक्वायर्ड था, तो 10 न्यूटन ही लगेगा। So in that case, what we do, ये जो n friction लिखते हैं, we call this as the maximum value of the friction. Mu s, this tells us the maximum value of the friction. So we'll modify our formula and write that F max, या maximum value of static friction को हम Fs max भी बोल सकते हैं, that is equal to mu s into n. तो static force जो होगा, static frictional force जो होगा, हमेशा mu s n से बराबर होगा या कम होगा। अगेन फ्रिक्शन लगेगा जरूरत के हिसाब से। So your static friction is always less than or equal to the maximum value of the static friction. I hope this is clear. So यहाँ पे this is F max. F max is mu Sn or F max, or you can write it as Fs max. This is your Fs max, maximum value of static friction. तो यहाँ पे जो static friction है, that is right, that is Fs max. But in this case, only static friction is acting. This is less than Fs max. Here static friction is less than Fs max. So let us do one more question. Let us say there is a block and mass of the block is of course 4 kg. Same thing, mu s is given. The value of mu s is 0.5. Large value compared to the real life cases. Find frictional force if
the value of F external force is equal to 15 Newton. Draw the FBT and find the value of frictional force, static frictional force. तो static frictional force तब लगता है जब relative motion ना हो। इस surface के बीच में, इस surface और इस block के बीच में कोई भी relative motion नहीं हो रहा। Kushak, you have to tell me the answer. What will be the value of static friction? Vaishnavi, can you tell me the amount of frictional force that will act? 15 Newton is the right answer. So friction हमेशा लगेगा जरूरत के हिसाब से, and here the value of friction required is less than the maximum friction. Fs is less than Fs max. तो maximum friction जो लग सकता है, the value of that is equal to μs into n, that is 20 Newton तक लग सकता है, but required है इसको rest में रखने के लिए, that is only 15. That is only 15. सर 15 कैसे आया? External force कितना लग रहा है? 15 न्यूटन। 15 न्यूटन। तो मुझे कितने फ्रिक्शन की जरूरत है रेस्ट में रखने के लिए? 15 चाहिए। 15 की वैल्यू 20 से कम है, तो फ्रिक्शन या तो 20 लगेगा या तो उससे कम लगेगा। मुझे 15 ही रिक्वायर्ड है, 15 ही लगेगा। ठीक है सर, यहाँ पे मैंने एफएस मैक्स लिखा। हाँ, एफएस मैक्स हमेशा नहीं लगता, एफएस मैक्स जब जरूरत पड़ेगा तभी लगेगा। तो फ्रिक्शन के बारे में 3 प्रॉपर्टीज है। इट अपोजेस रिलेटिव मोशन, पहला है फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन। सेकेंड प्रॉपर्टी इज दैट फ्रिक्शन लगता है, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन नॉर्मल फोर्स, जितना ज्यादा नॉर्मल फोर्स उतना ज्यादा फ्रिक्शन। इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ द नॉर्मल फोर्स। The friction depends on the normal force, and the third thing is that friction is a self-adjusting force. Means जितना required है उतना ही लगेगा। Friction is a self-adjusting force. So these 3 things you have to learn. So अभी static friction पे ही problem करते हैं। Static friction तब लगता है जब object rest में रहता है relative to the other surface, ठीक है। और kinetic friction तब लगता है जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो। एक क्वेश्चन और करते हैं। सो let 2 blocks, तो इसका मास है 2 kg, इसका मास है 3 kg, और मैंने फोर्स लगाया here, the value of the force is 10 Newton. यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन इन दोनों सरफेस के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन गिवन है, एंड उसकी वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है 0.3, और यहाँ पे स्मूथ है सरफेस। So find acceleration of the blocks, find acceleration of the blocks and frictional force between the surfaces. Frictional force between the masses. Frictional force between the masses. एक ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, एंड इसी के सिमिलर दूसरा क्वेश्चन है।
बट यहाँ पे फोर्स ऊपर वाले पे लग रहे हैं।